मेरे पास ये सैमसंग का ड्यूल टेकर बोर्ड है और ये ऑन बोर्ड है और मैं इसका सीपीयू करने जा रहा हूँ और ऑन करके ही देंगे।
तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने ये सीपीयू रिवॉल्व किया है। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद, रैम रिवॉल्व करने के बाद बोर्ड में लगाया है। लगाने के बाद आपको चेक कराया है और फोन आपका क्या हो चुका है, प्रॉपर ऑन हो चुका है। पहले आपने चेक कराया था ये? हाँ चेक कराया था। पहले चेक कराया था ना? हाँ। आपने सीपीयू बनाया, इसका रैम बनाई, सीपीयू बनाया, उसके बाद लगाने के बाद आपका ये ऑन हो गया। हाँ ऑन हो गया, ऑन था बोर्ड, ऑन कर दिया। इनको जो बोर्ड प्रोवाइड कराया था वो मैंने फ्रेश बोर्ड दिया था। फ्रेश बोर्ड था ना? हाँ बिल्कुल फ्रेश बोर्ड था, बिल्कुल सील एकदम लॉस थी। मैंने सील इसकी रिमूव की है और ऑन बोर्ड था और ऑन बोर्ड है। हाँ, तो इन्होंने जो पहले कंडीशन थी सेम कंडीशन आई है। नहीं पहले भी ऑन था, ये ऑन साइड दिया था इनको डोल देकर, क्योंकि हम ऑन साइड ही प्रोवाइड कराते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने हाथ से ग्लू कर क्लीनिंग हो गई, रैम रिवॉल्विंग हो गई, सीपीयू रिवॉल्व हो गया, ड्रम आपके जो कैसे भरे जाते हैं वो सारा प्रोसेस इन्होंने अपने हाथ से किया है। और आप देख सकते हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि अपने हाथ से जब सेट ऑन होता है ना तो पता लगता है कि हाँ अब हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह के अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है, इसी तरह की बोर्ड चाहिए आपको, तो आप उसके लिए स्क्रीन से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ इसी तरह से आपको बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं, जिस पर आप प्रैक्टिस करके अपनी जो हैंड स्किल है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। उसके साथ बाकी के सेक्शन होते हैं, जैसे चार्जिंग सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, पावर सेक्शन हो गया, वो सारे डीप चलते हैं ना आपको? हाँ चलते हैं। अच्छा, आपको लाइव क्लास हुई है बाकी सेक्शन की? हाँ सर लाइव क्लास हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। और ये देखो मैंने ऑन किया है, ऑन था और ऑन कर दिया है, ड्यूल टेकर है फर्स्ट बार। जो लोग यहाँ पे आने चाहते हैं गाइस, यहाँ पे आए और बेस्ट तरीके से अपना टेक्नीशियन बन के जाए। तो देखा दोस्तों आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल जब ही आता है जब अपने हाथ से काम करते हैं, उसके बाद ये लेवल आता है। तो दोस्तों आपको भी ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।